Hello everyone, I am Sneha Sajivan pursuing MSc Biotechnology from School of Biotechnology, DAVV University, Indore. The topic I am going to explain is characterization and functional analysis of candidate genes and transformation in plant biotechnology. At the outset, it is important to understand what a candidate gene is. A candidate gene is a gene suspected to influence a specific trait of phenotype based on prior biological evidence. That means ये एक ऐसा जीन है जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करता है. Traits being disease resistance, drought tolerance, etc. Up, it is selected based on known biological function or expression pattern. That means ये चूज किए जाते हैं बेस्ड ऑन नोन बायोलॉजिकल फंक्शन एक्सप्रेशन पैटर्न या समटाइम्स सीक्वेंस सिमिलैरिटी इज ऑल्सो बेसिस फॉर सिलेक्शन. अब इसका मेन एग्जाम्पल है PSY जीन इन गोल्डन राइस which is responsible for vitamin A biosynthesis. Now, the question that arises is how to identify a candidate gene. It can be identified through genetic, genomic, or molecular data. Now, many techniques are used for the identification of a candidate gene, the techniques being comparative genomics. As the name suggests, here we compare the genomes of different species. The second technique is QTL mapping. Here, QTL stands for Quantitative Trait Loci Mapping. It is a genetic technique where DNA markers such as SSRs or SNPs are linked to the observable characters of plants. Another technique is transcriptomics, which is used to study the expression levels of different genes. Another technique is mutant screening. So, all these are the techniques that are used for the identification of a candidate gene. Once we get the candidate gene, it is important to do its gene characterization. अब ये बताता है कि जीन का स्ट्रक्चर कैसा है, कब और कहाँ ये एक्सप्रेस होता है और इसका एक्चुअल रोल क्या है. Now it is done in three stages: structural characterization, expression characterization, and protein characterization. Let us discuss the three stages in detail. It defines the gene structure including exons, introns and regulatory elements. यहाँ पे हम जीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जैसे कि एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, प्रोमोटर्स, मोटिव्स और रेगुलेटरी एलिमेंट्स को. ये बहुत सारे बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स और पीसीआर या डीएनए सीक्वेंसिंग को यूज़ करके किया जाता है. पीसीआर टूल्स जो हम यूज़ करते हैं इंक्लूड ब्लास्ट, जीनियस, एनसीबीआई या एनसिम्बल प्लान्स. तो इस एनालिसिस के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जीन का फंक्शन क्या हो सकता है. Now, the second stage is expression characterization. Here, it determines when, where, and how much a gene is expressed. Techniques like RT-PCR, qRT-PCR, northern blotting, RNA sequencing, etc. हेल्प करते हैं हमें ये मेजर करने के लिए. ये हमें बताता है कि जीन एक्टिव है या साइलेंट इन डिफरेंट टिश्यूज़ और अंडर स्ट्रेस कंडीशंस. इसका एक एग्जांपल है DREB2A जीन जो ड्रॉट के टाइम पे अपरेगुलेटेड मिलता है, मतलब ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स में काम करता है. Now the third stage is protein characterization. Since the final product of a gene is a protein, here it studies a protein encoded by the candidate gene. It determines the structure, function, localization and activity. That means ये हमें बताता है कि ये प्रोटीन कैसे दिखता है, कहाँ प्रेजेंट है और क्या है इसकी एक्टिविटी. टेक्निक्स सच एज SG-SPAGE, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री etc. हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन. After gene characterization, the next step is functional analysis. Here, we determine the biological role of the candidate gene. Techniques such as RNAi, CRISPR-Cas9, tDNA insertion, and transgenic analysis are used for function analysis. It confirms genes' involvement in specific traits or stress responses. For example, DREB1A जीन को जब वीट में ओवर एक्सप्रेस किया गया तो प्लांट की ड्रॉट और
कोल्ड टॉलरेंस दोनों इम्प्रूव हुए. Now let us move on to the next topic, that is transformation. So transformation is a technique of introducing foreign DNA into a host organism. दैट मीन्स ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फॉरेन डीएनए को प्लांट के जीनोम में इंट्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ यूज टू स्टडी जीन फंक्शन एंड डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट्स. इसको मतलब ये टेक्निक को यूज़ करके हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. कॉमन मेथड्स विच आर यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स आर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर एंड जीन गन, ऑल्सो नोन एज बायोलिस्टिक्स. ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप हमें अलाउ करता है कि एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करें कि जीन का क्या इफेक्ट होगा प्लांट में. नाउ दिस टेबल शोज different transformation methods in different organisms. Like in bacteria, the transformation method used are heat shock, electroporation, chemical method that is calcium chloride method या conjugation. Plants में हम use करते हैं agrobacterium mediated transfer, gene gun biolistics method, PEG polyethylene glycol mediated transfer, electroporation and floral dip method. फंजाई में हम यूज़ करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन इज ऑल्सो अ कॉमन टेक्निक यूज इन मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. हियर we can see that in animals the technique used are micro injection, liposuction, electroporation etc. are used in animals. Plant transformation. So as we all know, plant transformation may we insert foreign DNA into plant cells to create genetically modified plants. It enables gene function studies, trait improvement and transgenic crop development. That means इस टेक्निक का मेन गोल है इम्प्रूव्ड ट्रेट्स इंट्रोड्यूस करना, जैसे कि पेस्ट रेसिस्टेंस, ड्रॉट टॉलरेंस या न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट. Many different techniques are used for plant transformation. The first one being agrobacterium mediated transformation. ये एक नेचुरल टेक्निक है जिसमें हम नेचुरली अकरिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस बैक्टीरियम को यूज़ करते हैं टू ट्रांसफर इट्स tDNA into the plant cell. The next technique is particle bombardment or gene gun method. Here we use microscopic gold or tungsten particles जिससे हम डीएनए को कोट करते हैं और हाई प्रेशर में शूट किया जाता है इनसाइड द प्लांट सेल. द नेक्स्ट टेक्निक इज PEG mediated transformation, that is polyethylene glycol mediated transformation, where DNA is directly introduced into plant protoplast by making their membrane permeable to the DNA. The next technique is electroporation, that is a direct gene transfer method where electric shock is given to the plant cells which create temporary pores which help in the intake of DNA. Now to check whether the plants have been transformed or not, we use selectable markers and reporter genes which helps to identify successful transformations. Now let us look at the steps in transformation. So the first one is gene identification and cloning. Here we identify a candidate gene linked to a desired trait and clone it using molecular tools like PCR. That is, here we make multiple copies of the gene using PCR technique. Now the second step is vector construction. Here we insert the gene into a vector with a promoter, terminator and selectable marker to ensure expression in the host. The third step is introduction into host cell. Here we transfer the recombinant DNA into plant cell using methods such as agrobacterium mediated transfer, gene gun, polyethylene glycol mediated transfer or electroporation. Now, the next step is selection of transformed cells. But not all cells take up the new gene. So, the transformed cells are identified using selectable markers. Example, growing on a medium containing an antibiotic so that only transformed cells will survive. Now the next step is regeneration of transformed plants. That is, here we use tissue culture technique to regenerate full plants from transformed cells via calysis.
and organogenesis. The last step is molecular confirmation. Here PCR या ब्लॉटिंग से हम चेक करते हैं कि इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है वो प्लांट में इंटीग्रेट हुआ है या नहीं. Now, let us look at the applications of transformation. The first one is crop improvement. Here, we make the crop resistant to drought, pest, or salinity. Nutritional enhancement, for example, golden rice with vitamin A. Uh, the other application include pharmaceutical production, that is edible vaccines, yeah, protein production. Functional genomic study, for functional genomic studies also we use gene transformation. Now, its application also include phytoremediation, that is plants that clean environmental pollutants. So we can say that transformation bridges basic research and real agriculture. Let us look at the advantages and limitations of gene transformation. The advantages include precise gene transfer, creation of transgenic plants, useful for functional genomics and gene expression studies. It reduces the use of chemical pesticides and fertilizer dependency. And the limitations are low transformation efficiency in some species, and it is expensive and time consuming as well, and many biosafety concerns are related to this. In many cases, gene silencing can also happen. So, there are many limitations as well, but still, we can say that transformation is the backbone of modern biotechnology. To conclude, we can say that candidate genes, characterization, and transformation are core tools of biotechnology. हम कह सकते हैं कि ये टेक्निक्स हमें जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़फुल है, उसके उनके फंक्शन समझने में यूज़फुल है, और इम्प्रूव्ड क्रॉप्स बनाने के लिए भी ये यूज़फुल है. ये टेक्निक्स हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी अचीव करने में हेल्प करते हैं. Thus, we can say that these processes together form the link between genomics research and real world applications. Thank you so much, everyone. I hope this presentation helped you understand how gene characterization and transformation are useful in shaping the future of plant biotechnology.